एवरीवन, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये NBHM 2024 से है. Let us see what the question is. The question is, for which values of n belongs to z does the polynomial x to the power 4 plus nx plus 3 has a rational root? तो हमको जो polynomial given है, let us name it as p of x equals x to the power 4 plus nx plus 3. And this polynomial belongs to z of x. इसके जो सारे कोफिशिएंट्स है, all of them are integers. The question is, ऐसा कौन सा वैल्यूज ऑफ n है जिसके लिए इसके पास एक रेशनल रूट है? तो जब भी हम रेशनल रूट देखते हैं, हम हमारे दिमाग में सबसे पहले ये रेशनल थ्योरम के बारे में आता है. रेशनल रूट थ्योरम. Let us see what the rational root theorem says. अगर कोई एक n डिग्री पॉलिनोमियल है, p of x equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 up to a1x plus a0. अगर कोई एक पॉलिनोमियल z of x में बिलोंग कर रहा है, of course with an non-zero, which says that p is an nth degree का polynomial, and if alpha equals to p by q, which is a rational number, is a root of p of x, then दो चीजें होता है. The first thing is q divides an, and the second thing is p divides n. जो q जो डिनोमिनेटर में है, जो नीचे है, वो सबसे बड़ा लीडिंग कोफिशिएंट उसको डिवाइड करता है, एंड जो p है जो न्यूमरेटर में है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता है. दिस इज व्हाट आवर रेशनल रूट थ्योरम सेज. एंड यहाँ पर अगर मान ले अल्फा इक्वल्स टू p बाई q इज अ रेशनल रूट, मान लो कि कोई एक हमारे पास रेशनल रूट है. रेशनल रूट यानी इट अल्फा बिलोंग्स टू q. अगर ऐसा है तो q, as per the rational root theorem, q divides the leading coefficient जो कि 1 है. That means the possible values of q are plus or minus 1. And जो numerator है p, that divides the constant term which is 3. And 3 is a prime number, so इसका दो ही positive divisors है which are 1 and 3. And if we include the negative divisors also, it is plus minus 1 or plus minus 3. So these are the possible values of p and q. And अभी अल्फा का क्या क्या वैल्यू हो सकता है वो देखते हैं. अल्फा इक्वल्स टू p बाई q है. So अगर p और q का वैल्यूज में रेस्पेक्टिवली सब्स्टिट्यूट करूं इन अल्फा, then I get 4 different roots. 1, minus 1, 3 and minus 3. So these can be the 4 roots of the polynomial p of x. And as alpha is the root, we have p of alpha equals to 0. So let us see for 1. अगर p of 1 find करें, तो I would get 1 plus n plus 3. This is equals to 0, and this gives the value of n to be equals to minus of 4. वैसे ही अगर हम p of minus 1 देखें, p of minus 1 is 1 minus n plus 3 equals to 0, and this gives us the value of n to be equal to plus 4. And वैसे ही अगर मैं p of 3 का वैल्यू देखूं, p of 3 is nothing but 3 to the power 4 plus 3n plus 3. This is equals to 0, and this gives me the value of n to be minus 3 to the power 4 minus 3 divided by 3, and one of the 3 gets cancelled, and minus 3 cube minus 1, which is minus of 28. And वैसे ही अगर हम p of minus 3 देखें, p of minus 3 is 3 to the power 4 minus 3n plus 3 equals to 0. And from here I get the value of n to be 3 to the power 4 plus 3 divided by 3. And this gives us the value of n to be 27 plus 1, which is 28. So what are the possible values of n? They are either plus minus 4 or plus minus 28. So for these values of n, the polynomial which is given in the question can have a rational root. And if it has a rational root, it has to be an integer. That is the next part. Okay, I hope everyone have enjoyed the solution. Thank you.